मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है. Welcome to this edition of Manushi Samvad. I'm sure most of our viewers are going to be very surprised. Suddenly हमने टाटास और रतन टाटा की कैसे सोच ली. और आज का थीम आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, टाटास द हाउस दैट रतन बिल्ट. इसमें दो राय नहीं कि मैं बहुत कम इंटरेस्ट लेती हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एंगेज करने में. और आज इस सवाल पर या इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं the one and only Suhel Seth. You've seen him on TV. बहुत टीवी डिबेट्स में बहुत जमकर बहस करते हैं और खूब प्यार से लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं बहुत से इश्यूज पे. और एक दो बार तो हमारी आपस में भी टीवी में ही मुलाकात हुई थी और फिर खूब धुनाई हुई एक दूसरे की उसके बाद हमारी. और आपने मेरी धुलाई की थी, दोनों ने की थी. आपने मेरी, फिर मैंने जम के आपकी वगैरह वगैरह. और समय लगा एक दूसरे को समझने में. और सुहेल, इनका अगर आप सीवी पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि किसी और दुनिया के प्राणी हैं. बहुत से कॉर्पोरेट्स को ये कंसल्टेंट है और बहुत कुछ उस दुनिया के बारे में जानते हैं जिसके बारे में मेरा ज्ञान बहुत कम है. अच्छा सुहेल, आपको मैंने खुद ही बताया था वेलकम टू दिस शो, बट यू रिमेम्बर व्हेन आई कॉल्ड यू टू टॉक अबाउट द हाउस ऑफ टाटास और रतन टाटा इन पर्टिकुलर, तो मैंने कहा था कि मैंने एक छोटा सा क्लिप आपका देखा है कुछ साल पहले, शायद एक टीवी चैनल से निकाला हुआ, और वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जब आया, I was deeply moved by that little snippet. और उसको देख के मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं, since you're very close to Ratan Tata and the entire group, I thought none better than you to talk about them openly. और बहुत से जो सवाल हैं हमारे दिमाग में कुछ चीज़ों पर, वो भी आप जवाब देंगे बेबाक होके, ये मुझे विश्वास है. तो वो पहले क्लिप दिखा दे सुहेल, if before you start. please. 2000. Last year on February 6, 2018, Prince Charles wanted to give Ratan Tata the Lifetime Achievement Award for Philanthropy at Buckingham Palace. Yes. Everything was set. It was under the auspices of the British Asian Trust. I reached London on the 2nd or the 3rd of February, and there were 11 missed calls from Mr. Tata. Yeah. So I said, God, what's happened? So I'm picking up my bags at Heathrow from the conveyor belt, and I called Mr. Tata. I said, what's happened? He says Tango and Tito, his dogs. Yes. One of them had fallen terribly ill. Yes. He's saying, I can't leave him and come. So sensitive. I said, Mr. Tata, Prince Charles has organized this Lifetime Achievement Award. Yes. He didn't come. He did come. And you know what? वो लास्ट सेंटेंस आपने मिस कर दिया कि प्रिंस चार्ल्स को, आशीष यू कट इट एट अ वेरी रॉन्ग पॉइंट. द नेक्स्ट सेंटेंस सुहेल आप ही बोल दो कि क्या रिस्पांस था. When I told Prince Charles, I said, Mr. Tata's dog has fallen ill and he can't leave the dog alone. And Prince Charles said, this is a true man. Because as you know, Prince Charles, Queen Elizabeth, they're all very, very pet-friendly, pet-loving. They're a pet-loving family. But also, Madhuji, what happened was there was an indication in Prince Charles's comment that character is bigger than getting an award or getting a felicitation, and that character is shown up in the most minor ways, in the most minute ways, when you least expect it. जब आपको कोई expectation नहीं है और एक आदमी या एक महिला अगर अपनी कैरेक्टर का दिखावा करे एक छोटी छोटी बात से, उसमें जो आपको प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव कभी नहीं और पड़ेगा. हाँ, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि इतना बड़ा माना जाता है वो ऑनर ऐसा, और उसके लिए तो लोग बीवी बच्चों को छोड़ के भी चल जाएं. Most people wouldn't mind if their own children were sick and dying, but they would run. और एक पेट डॉग के लिए, और ऐसे घर में जहाँ जाहिर है कि बहुत से असिस्टेंट्स होंगे, घर को देखने वाले,
कुत्तों की सेवा करने वाले और बाकी सब भी करने वाले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रतन टाटा के पास कोई और था नहीं. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? वाज इट जस्ट indifference or this passionate love for somebody who invested his all in people other than his own family, and because he never had children? I think it's a great question. You have to understand the man. You and I refer to them as dogs. I'm a pet lover. I've been a pet lover all my life. For him, they are not pet dogs, they are family. And he believes whoever's with him, whether it is his help at home, whether it is his driver, they are part of his immediate family. And that's how he treats people within the group. आपको पता नहीं याद होगा कि उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक फोटो, एक तस्वीर डाली थी जहां पे एक आदमी ताज के बाहर एक छतरी लेके, एक डॉग के ऊपर बारिश प्रिवेंट करने के लिए एक छतरी लेके खड़ा हुआ है. एंड मिस्टर टाटा रीच्ड आउट टू हिम. क्योंकि मधु जी, एक बात है, अगर हम इंसान हैं और अगर जानवरों की हम कदर नहीं कर सकते तो हमारे और जानवरों के बीच में क्या अंतर होगा? नंबर वन. नंबर टू, जैसे कि आपने सही कहा कि उनके पास सब कुछ है, पर हर मनुष्य के पास सब कुछ कभी नहीं होता. उनका परिवार, उनका निजी परिवार वो परिवार है जो उनके साथ रहता है, जो उनके घर में काम करता है, जो उनके साथ जीवन बिताता है, और उसमें टीटो टैंगो भी शामिल थे. आपके लिए और मेरे लिए वो पेट्स होंगे, पर उनके लिए वो परिवार थे और हैं. मैं आपको एक बात बोलूं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक जो मर गए थे एक कुत्ते की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. कि मुझे याद आ रहा है, टीटो याद आ रहा है, आज वो 14 वर्ष का होता. तो ये जो अहमियत वो देते हैं, इस अहमियत में सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, पर द अप्रोच ऑफ द ग्रुप comes visible. So to my mind, compassion is not what Madhuji or Suhel does. Compassion is also how we treat everyone, especially animals. And one last thing, Madhuji, अगर आप लंदन में पार्क स्ट्रीट पे जाएं तो आप देखेंगे एक मेमोरियल है. It is a memorial for animals who died in World War II. And below that there's a beautiful line. They died, full stop, because they had no choice. That, to my mind, sums up compassion, it sums up empathy, it sums up everything else. It also sums up our attitude of treating animals and often even human beings Absolutely. as instruments of our plans and our agendas without care for their agency. तो ये तो बात जैसे मैंने कहा मेरे बहुत दिल को छू गई, क्योंकि अगर वैसे कोई प्राइवेटली इतना केयर करे, ऐसे मैं बहुत से लोग जानती हूँ जो अपने पेट डॉग्स के साथ बहुत प्यार करते हैं. मेरे घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, परंतु जो इवेंट की आप बात कर रहे हैं ना, एक इंटरनेशनल ऑनर मिल रहा है और उसको छोड़ के आप नहीं जाते, तो वो कुछ और ही कहानी बताती. तो ये कैसे रिफ्लेक्ट किया ये हाउस ऑफ टाटास के सारे एम्पायर बिल्डिंग में, ये जो क्वालिटी है रतन So टाटा? I think you've raised a very, very pertinent question. Let's go back in time. Today, the group is 153 years old, 153, 154 years old. The founder was a gentleman called Jamshedji Nasarwanji Tata. Jamshedji Tata began his career and said that, look, my purpose of business is not business, it is to give back. The seeds of philanthropy, the seeds of community engagement were sown then. He said of Jamshedpur, he says, if you plant trees, they will last many, many years. But if you plant men and women, they will outlast everything. I'll give you a small example, जो लोगों को नहीं पता मधु जी, और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में हम वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को इतनी अहमियत देते हैं, यानी कि जो हमारे जमशेदपुर में हुआ, जो टाटा स्टील ने किया, वो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं.
टाटा स्टील पृथ्वी भर में पहली कंपनी थी और है जिसने 5-day वीक इंट्रोड्यूस की, मैटरनिटी लीव इंट्रोड्यूस की, प्रोविडेंट फंड इंट्रोड्यूस किया, women workforce on the shop floor इंट्रोड्यूस किया, and Tata Steel was the first company to do this across the world. Number one. Number two, टाटा ट्रस्ट आज एक एक 128 साल का हो गया. They have been functioning for 128 years. बिल गेट्स और वॉरेन बफेट तब पैदा भी नहीं हुए थे. The give back is in their blood. Today, Tata Trust owns 66% of Tata Sons. और एक खूबियत है, जब साइरस मिस्ट्री चेयरमैन बने, उस टाइम देयर वाज अ ह्यूज शेक अप and the culture shook very, very badly. That I'll be honest with you. Today, the good thing is we have N. Chandrasekaran as the chairman of Tata Sons. Chandra began his career as an intern in TCS and rose the ranks. He comes from a small village. Madhuji, it also tells you कि in Ratan Tata's eyes, pedigree does not matter. आप कहाँ पैदा हुए, that doesn't matter. आप कहाँ पढ़े लिखे, that doesn't matter. What matters is merit. What also matters is your values. What also matters is your architecture, human architecture. अब जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ तब चंद्रा चेयरमैन था और अभी भी चंद्रा चेयरमैन है. चंद्रा knew how the group behaves, what the group believes in. आप बॉम्बे हाउस जाइए, जो हेडक्वार्टर्स है होमी मोदी स्ट्रीट पे, और जो आपको पहली चीज नजर आएगी, there is a functioning kennel, Madhuji, in the lobby of Bombay House, जहां any stray dog, anyone can come in, have a meal, get groomed, get washed. आप मेरे को बोलिए कितनी कंपनीज पृथ्वी भर में ऐसा करेंगी? नहीं करेंगी. एक बात है, हम बोलते हैं ना कि मुझे विश्वास है, मुझे ये है, मुझे वो है. विश्वास रखने से बात नहीं बनती. बात तब बनती है कि विश्वास को अगर आप एक ऐसा मैजिक दें और एक ऐसी रियलाइजेशन दें, एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन दें, तब जाके बात बनती है. एंड द टाटास एंड स्पेशली रतन एंड नाउ चंद्रा, दे आर वॉकिंग द टॉक. दे आर नॉट सेइंग दिस टू प्लीज यू मधुजी और प्लीज मी. दे जेन्युइनली बिलीव इन दिस. यू सी, आई हैव बीन प्रिविलेज्ड. मेरी सैलरी 650 रुपए थी 1990 में, when I was a management trainee with Ogilvy and Mather. That's when I started working with the Tatas through Tata Steel. उस समय रूसी मोदी चेयरमैन होते थे. 2 साल बाद में 1992 और 93 रतन टाटा took over. Now, जो आपने बढ़िया सा टॉपिक बनाया है, Tata's the house that Ratan built. At that time, the Tatas were more of a domestic India-based company. He then spread the wings of the Tatas, and he always said, it is not the wings of the Tatas. I'm spreading the wings of the competent, meritorious, deserving Indian. And that's what he did. And that, to my mind, was the most important thing. And I think if we believe in all these things will work beautifully. But the point, Madhuji, is कि lot of people in India have done that. आप अगर मनुस्मृति की बात करें, 3800 साल पहले मनु ने पहले दान शब्द का इस्तेमाल किया था. दान हमारे अंतरात्मा में है, हम में समाया है, पर हम फिर भी ये बोलते हैं नहीं भाई, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट हैव टॉट द वर्ल्ड हाउ टू गिव बैक. नहीं, इसमें दो राय नहीं कि हम सिर्फ हमारे संस्कार में, डीएनए में है. और मुझे याद है मेरी दादी कहा करती थी कि जो व्यक्ति या जो परिवार अपनी इनकम का एक नियमित हिस्सा दान में नहीं देते हैं, और वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, दान वैसा नहीं कि वो आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, नेकी कर कुएं में डाल वाला, ऐसा घर वो कहती थी is akin to a house without a drainage system, जिसमें परनाला नहीं है, जिसमें ड्रेनेज नहीं है. आप जितना बढ़िया मर्जी आलीशान बंगला बना लो, अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो वो घर रह जाएगा.
it'll just collapse. तो ये उनका मुझे याद है. और there's another thing that she used to say, you have to practice it every day. दान देना Absolutely. ये नहीं है कि साल के एंड में आपने अपने हिसाब ठीक करने हैं. और मुझे ना एकाएक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है. इंसिडेंट, मैं अमेरिका में थी, एक जैन फैमिली के साथ कुछ दिन रुकना हुआ. आई हैड गॉन देयर फॉर लेक्चर्स, दे वर होस्टिंग मी, एंड दैट जैन मदर टोल्ड मी दिस स्टोरी, हाउ उनकी सासू माँ ने बच्चों में रोज दान की महत्व बताई. वो कैसे कि स्कूल जाने से पहले उनको वो टक मनी मिलती है ना बच्चों को, पॉकेट मनी, तो माँ देती थी. तो दादी इंसिस्ट करती थी कि ये गुल्लक में ये दान के लिए आपने डालना है. तो कई बार बच्चे चिढ़ते भी थे और उनकी माँ भी कहती थी, भैया आप ना महीने में एक बार डलवा लिया करो, सुबह सुबह उनको मत रोको. And then the Dadi explained, no, before they spend money on their own snacks in school or their ice creams or whatever, they must first every day practice giving before consuming. Absolutely. It blew my mind, that story. And that practicing, it's like, अच्छा अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो रोज आपको रियाज करना पड़ेगा. तो अच्छा इंसान बनना है तो रोज आपको देना और अनकंडीशनली देना सीखना पड़ेगा. अच्छा, अब मैं देख रही हूँ हमारे बहुत से व्यूअर्स के ऑलरेडी कमेंट्स आए हुए हैं. वो कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी है. I'll come back to his management strategy, how he handles people. आपने कुछ चीजें तो बताई कि कैसे सोशल वेलफेयर मेजर्स अपने स्टाफ के लिए, they've always been ahead of time, not just for India but globally. All right, granted. But दो तीन चीजें जो सवालों में आ रही हैं जो मेरे दिमाग में भी है. Given the way the Parsi community came to India, seeking refuge from a very tyrannical regime in Persia, where their very survival was made impossible, और यहाँ कैसे उनको खुला माहौल मिला, और they prospered like nowhere else. अब तो कहीं भी चले जाते हैं, यूरोप में भी प्रॉस्पर कर सकते हैं. उस वक्त वो माहौल नहीं था जब वो हिंदुस्तान में आए. परंतु मेरे जितने भी पारसी दोस्त हैं वो सभी के सभी इस आज मैं देखती हूँ प्रो कॉमी, प्रो इस्लाम, एंटी हिंदू, और बहुत ही विरुलेंट फॉर्म में. They seem to have no memory of their own community's historic experience कि हाँ हिंदू फासिस्ट नहीं होते, कैसे उनको. और ये जो बीमारी है कमेंट्स में दिख रही है कि टाटा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी दिखती है. बहुत से लोग कह रहे हैं टिस जो है इट इज मतलब जिहाद का अड्डा बना पड़ा है. जैसे वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग की हम बात करते हैं, ये तो जेएनयू का एक्सटेंशन काउंटर बना हुआ उस लिहाज से. और उसके अलावा भी कभी जो हमारे इस देश में सिविलाइजेशनल कंसर्न्स हैं और हिंदू समाज के प्रति जो एक होना चाहिए सद्भावना का विचार, वो नहीं दिखता इनके किसी ट्रस्ट में या इनका टिस जालिम संस्था है. As I said, it's like an extension counter of भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह mindset of JNU. So let me begin at the beginning. Swami Vivekanand and Jamshedji Tata met on the ship when they were sailing from India towards London, and Swamiji was going off to America. The concept of the Indian Institute of Science was born out of that meeting. It's a documented fact. If you read any book on Swami Vivekanand, आपको ये पता चलेगा. Indian Institute of Science was started by the Tatas, funded by the Tatas, gifted to the nation. Yeah. Tata Institute of Social Sciences, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, the same. Tata Memorial, the first multi-speciality dedicated to cancer hospital, same. Tata Institute of Fundamental Research, same. NCPA, the National Center for Performing Arts in Bombay, the same.
पर आप ये हैरानी आपको होगी, मैं जो अभी आपको कहने वाला हूं. If Ratan Tata wants, he cannot get a ticket at NCPA for a show. We have zero control. There ऐसे is no कैसे? control. I'll tell you. There is no control over TIS. There is no control over Indian Institute of Science. These controls were given and handed over to the government in the mid 70s. आप अगर टिस की ट्रस्टीशिप देखें या टिस का बोर्ड देखें, there is not a single Tata nominee. There is not a single Tata nominee on NCPA. But that is the way. Madhuji, everyone doesn't function in the same way. अगर कोई और होता, he would have insisted कि लाइफ टाइम के लिए मेरा एक आदमी या मेरे दो आदमी आपके बोर्ड पे रहेंगे. But that's not the way Tatas are built. The Tatas built this in the service of the nation and gave it to the nation. Now, coming to the second question of yours about the Parsis. Field Marshal Manik Shaw, there was no one more patriotic and more Indian. Absolutely. ठीक है. जितने पारसीज आप बोल रहे हैं कि भाई प्रो इस्लाम है, ये है, पारसीज में एक चीज है, for them religion is unimportant. What is very important is human value. And not all Parsis are rich. You see the way Parsis are looking after the aged Parsis, whether it's in Khushro Bagh, whether it's in Dadar, in the Parsi colony, whether it's in the multiple hospitals. But those hospitals don't only treat Parsis or don't treat only Parsis. My point is, हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हमारे देश में कि we are finding, and you're absolutely right, but we are finding holes in everything and we are becoming cynical and bitter. And as you rightly said, ये जो comments भी आ रही हैं, half the people who are making these comments don't even know the facts. And it's not their fault. These facts should have been communicated. But who are we to communicate? I mean, who is the Tatas to communicate? वो एक पुरानी कहावत है, मेरी दादी जी भी कहती थी, नेकी कर कुएं में डाल. तो एक 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 व्यू पॉइंट है कि भाई why do you relinquish control? The other viewpoint is we are not in the business of running NCPA. Today मैं आपको बोलता हूं, there are more cancer facilities that have been set up by the Tatas than by anyone else, including in Varanasi. आप बनारस में जाके देखिए जो टाटा ने कैंसर सेंटर सेटअप किया है. Today, Tata trusts are giving away almost 674 crores per annum. And it is not to the so-called commies or the leftists or anything. There is a program they did in partnership with Google called Internet Sathi. That was for women empowerment, to tell women in rural India how to get onto the internet and make their life easier, whether it was for procurement, for information, for entertainment. Now, my point is that it's very easy for all of us. और हर कम्युनिटी में दोष है. मैं एक बहुत प्राउड हिंदू हूं, हमारे कम्युनिटी में भी दोष होगा. तो मेरी बात, हम दोष इस तरह नहीं ढूंढ रहे, हर कम्युनिटी में दोष होगा, पर आप देखिए ना, एक बहाव होता है. जैसे 100 साल 150 साल पहले तक सिख और हिंदू इनसेपरेबल थे. एक ही परिवार में एक केशधारी है, एक सहस्त्रधारी है. पंजाब में हिंदुइज्म से तो निकला सिखिज्म. नहीं, उसी का सनातन विजडम का ही है. और ये सारे देवी पूजक थे. नाम भी इनके गोविंद है. नाम भी अगर देखिए हमारे गुरुओं के, तो उसमें जरूर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई अलग स्पीशीज से निकले हुए हैं नाम. करेक्ट. और चंडी के उस उपासक थे गुरु गोविंद सिंह. नानक जी के उसमें भी शिव भक्ति है, राम नाम से भरा हुआ है. परंतु देखिए ना, आप जो बहाव हुआ है, जो खालिस्तानी मोड़ आया, या 19th सेंचुरी 20th अर्ली 20th सेंचुरी ने, अंग्रेजों ने जैसे सिखों को अलग करने की जो षड्यंत्र करी, वो चलती गई. और आज एक पॉलिटिक्स उठ खड़ी हुई है जिसमें हम हिंदू नहीं है वाले आवाजें बहुत शार्प और पंजेंट तरीके से प्रहार कर रही है. इसी किस्म से पारसीज भी, जो आप मानिक शॉ की जनरेशन कहते हैं, उस तक, या सोली सोराब जी की जनरेशन तक भी ये नहीं थी. Fali Nariman has been the protector of the Indian Constitution and therefore of the average Indian's rights more than anyone else. अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं जो आप हैरान हो जाएंगे. Ratan Tata is one of the most avowed believers in Tirupati. Can you believe it? No. Mr. Krishna Kumar and Ratan Tata have been
more times to Tirupati than I have. And I'm a great believer in Balaji. तो ये सी बात ये है मधु जी कि लोग कहते नहीं है उसका मतलब होता नहीं, ये सच नहीं है. Number one. Number two, as you rightly said, there are many people hijacking all agenda. Some people are hijacking a religious agenda, some people are hijacking a political agenda, some people are hijacking a social agenda. But the point is, when you're hijacking these agendas, do you lose your core values? और मेरे कहने का मतलब है, अगर आप टाटास को देखें, the core values have remained unchanged. Because their selection is not based on what religion you are from, what is your caste, what is your creed, what is your gender. It is based on merit. And there is no finer example than Chandrasekharan, who is today the chairman of Tata Sons. Avowed Hindu. R.K. Krishna Kumar जो पहले थे, avowed Hindu. ये नहीं कि भाई कोई ये बोलता था कि भाई आप हिंदू धर्म का क्यों पालन कर रहे हैं, आप क्यों ये विश्वास करते हैं. नहीं, वो मान लिया. आपकी बात सही है. और मैं इसीलिए आपको इनवाइट किया क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में, इंक्लूडिंग मेरे दिमाग में, सवाल थे जो कि अच्छा है कि हम and I love the fact that you're asking. I must say here, I have always admired your ability to come to the point, and I've admired your candor. And I'm not saying this to flatter you. I've always admired your candor. In fact, for me, you are a formidable opponent in a debate because you can express it like very few people can. So I'm glad you're asking the questions, because I'm built from the same stock of not dodging a question. Yeah. Of saying that, yes, Madhuji, you have asked the question, this is the answer. And my answers are based on facts. Okay, let's get a few things clarified. Firstly, Sure. ये आपने जो बात बताई कि all these institutions, see, Indian Institute of Science indeed is the most premier institution. और जब भी कोई ranking होती है तो आया Indian Institute of Science is right at the top. No Correct. doubt about it. परंतु आपने जो कहा कि they handed them over, TIFR, कितने बड़े बड़े नाम हैं ये, they've handed them over to the nation. पर ये जो टाटा ट्रस्ट्स हैं जो एनजीओस को भी फंड करते हैं और उनके जो सारे गेट कीपर्स हैं वो टेस्ट ट्रेंड ही सोशल वर्कर्स या जो भी कहे डेवलपमेंट वर्कर्स हैं, और वहां पे ये गेट कीपर्स दे मेक श्योर दैट हिंदू बैशिंग, टुकड़े टुकड़े गैंग पॉलिटिक्स इज व्हाट प्रोलिफरेट्स. और ये जो टिस के जो मैं अनुभव सुनती हूँ कुछ स्टूडेंट्स से जो उस बहाव में नहीं बहना चाहते थे, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है वहां के माहौल में, इतनी टॉक्सिक हो जाती है. द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ दलित पॉलिटिक्स, टॉक्सिक, आई डोंट मीन दे आर प्रो disadvantaged groups, but actually bringing toxic hatred between various groups. इसी किस्म से हिंदू मुस्लिम सवाल पे जिस तरह का नैरेटिव चलता है टिस में ना, पैसा तो टाटा ट्रस्ट से भी आता है और इसमें आप ब्लेम कर सकते हैं वैसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को भी, क्योंकि पैसे वो भी देते हैं और उनको कोई परवाह नहीं कि उनकी सारी सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन टुकड़े टुकड़े गैंग मास प्रोडक्शन कर रही हैं फैक्ट्रीज वो. तो ये तो सरकार का और भाजपा सरकार का बहुत बड़ा दोष है कि इन्होंने रिव्यू ही नहीं किया इनका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है. परंतु टाटा ट्रस्ट तो कर सकता है कि हो क्या रहा है उसमें, और जो पैसे दे रहे हैं किस किस्म के एनजीओस को फंड करते हैं, किस किस्म का आउटपुट निकल रहा है, इवन इंटेलेक्चुअल आउटपुट, academic output. There should be a committee to do that, because what's coming out is giving the Tata House a very bad name, and I vouch for it. Okay, excellent question. Now let me give you point by point factual response. Number one, Tata Trusts do not fund NGOs. तो वो आपकी information गलत है. What Tata Trusts do is they fund projects. They fund projects which have nothing to do most of the time with NGOs. For instance, the Internet Sathi project जो जिसका मैंने जिक्र किया, वो is a project run by people from within Tata Trust. और उसमें मधु जी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है. नंबर वन. नंबर टू, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एक आदमी थे और अभी भी हैं, प्रभात पानी. Prabhat Pani was working with Tata Tea, one of the most stellar careers he ever had.
He opted out of corporate life and said, I want to work for the trust. He has been looking at the water mission. There are people who are looking at oncology. As far as oncology and cancer research is concerned, we have the finest people. And there is an Indian who has been funded. That Indian who was funded is developing an accelerator, a mobile cancer accelerator, which will give you cancer treatment parameters instantly. तो ये गलत फहमी है लोगों की कि टाटा ट्रस्ट फंड्स एनजीओज. नो, टाटा ट्रस्ट रन्स प्रोजेक्ट्स themselves precisely for the reason you mentioned. We are not a funding house. We are a house that actually conducts. I know it. I'll tell you where the funding is. मैं आपको बोलता हूँ. Funding is where there are scholarships. These scholarships are decided. Scholarship भी नहीं है, projects जो है ना NGOs को. I know because some of them had come to me, and some of my friends, old time friends, have been in charge of those funding of projects to NGOs. So, to answer your question, let me explain it in detail. Suppose Madhu Kishwar is NGO, and Madhu Kishwar has decided that she will run a program for the girl child in select slums in Delhi. Then it is the project that we are funding. We are not looking at you. We are thinking that you are the best person because you're delivering that project. So the evaluation is not done on Madhu Kishwar or Madhu Kishwar's NGO. It is done on the impact study of that project that Madhu Kishwar ji is doing for the girl child in the slums. It's a very, very clear-cut perspective. A, B. आप trustees को देखिए. These are all eminent people who don't need to make money from the trust. These are people who get paid nothing. आपको मैं बोलूं, she was there recently and she has just retired from the trust. The trusts have had some very eminent people. Amrita Patel, who used to run Amul. She's as Indian, as patriotic as anyone can get. She brought a lot of experience of the cooperatives. Today you have Vijay Singh. You have Pramit Jhaveri. Pramit Jhaveri was the former head of Citibank. You have Noel Tata. Earlier you had Soonawala. So there is a lot, Madhuji, in terms of the trust. And look, let me be honest. I'm not here to praise someone, and neither have I come to bury someone to quote William Shakespeare and Julius Caesar. But the point is, it is very important because you run both intellectually and otherwise a program that should that shouldn't filter information. It should be broad-based and it should give information as information should be taken. Hence the clarifications that I'm giving. No, it's very valuable, but all said and done, I would still urge you to communicate of course, the powers that be. The fact that आपके मन में ये doubt है and political audit of this and all these organizations that are funding projects, and with what outcome. I think it's really important that it's done because the gatekeepers I know are all coming from a certain orientation and they sift out. और TIS का तो please academic political audit करवाइए. पर मैं आपको एक बात बोलूं, ये ना बेगानी शादी भी अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा. हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. टाटास का रोल मधु जी इन द मिड 70s स्टॉप्ड. अब नाम तो है. नहीं, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि देखिए, अगर मानुषी के नाम से मान लीजिए हमने किसी को किसी जमाने में कुछ दिया सेटअप करके और मानुषी के नाम से बहुत टॉक्सिक पॉलिटिक्स चल रही है, तो केवल और कुछ नहीं, अपने नाम को सेफ गार्ड करने के लिए ये जरूरी है उसका एक हल्का फुल्का एक एकेडमिक ऑडिट. और वहां जो जिस किस्म की रिपोर्ट्स मैं सुनती हूँ, they are really worrisome. Then on the field, I totally agree with you, and I will carry back to the limited ability of mine. I will carry back your concern. I will also carry back the fact that there is a misconception which needs to be corrected. Because मैं आपको एक बात बोलूं, when a group is as venerable as this, why should it have a blemish in an area over which it has no control? मैं समझ सकता हूं कि अगर उनके ऑपरेटिंग कंपनीज में ये कांड हो रहा होता, पर वहां भी नहीं है. So why should they suffer a blemish when all they have done is actually give back to the nation? So I totally agree with you. I totally agree, and I will carry back this message. अभी एक हमारे व्यूअर लिख रहे हैं, एक तो दो पॉइंट्स आए थे जो आप क्लियर कर दीजिए, but I really want to get back to the real issue that I was initially interested in.
how he built, what are the foundational values that helped him build this grand empire with a much higher level of professional ethics than most corporates observe. But coming to 2 points that were being raised, एक तो कश्मीर पे इनका स्टैंड, और कोई कॉन्फ्रेंस की थी 1990 में टाटाज ने, where they took a very anti-India hostile stand. ये कश्मीर किसी 5 स्टार होटल में हुई होगी, पता नहीं. I दूसरा don't कह रहे believe हैं it, Tata and frankly, Fund I don't know. hires scroll print, but all these are very left wing, kind of take a very hostile stand vis-a-vis the regime at play in a manner that's blind hatred. It's not issue based. Like, you criticize the government on certain issues while you may celebrate it on some others, but that's not what these wire and all these very toxic narrative runners are doing. And I'm told, I didn't know, does Tata fund them? No, I don't think so. But I don't want to say yes or no. I don't know. I've never been brought up to say something with finality where I have a gray area or I don't have information, but I will check this out. Okay, good. So basically, what you're saying is that they created these institutions, then they gifted them to the nation, and now they're not really controlling them in the way that most of us were thinking. They have maybe decided to fund and support a certain kind of politics. You think that's really not the case? So Good. I will tell you one thing, and this you must accept from where I come, because I've been around for a long time, qua the Tatas. There is no political alignment in that group. The only alignment is with the people of India and with their employees and their stakeholders. आप अगर जमशेदपुर को देखें या पुणे में टाटा मोटर्स को देखें या जहां भी आप जाएं, you will see the cosmopolitan microcosm of a unified India which does not harbor grievances, which does not harbor ill will towards any human being, as long as merit is visible. Number one. Number two, please understand, Madhuji, कि sometimes when you and I support an institution, if that institution goes rogue later, we cannot be blamed. Yes, you're right where you say that naam to is still your name is still at the door. Yes, but the fact is that suppose you take punitive measures, those measures then again boomerang. As you rightly said, we have to analyze the Tatas not in last year, not in year before, or not in 10 years. This is a group that has been around for more than a century. It's more than a century of trust. Will there be mistakes that any group will make? Of course. Now, I don't know about this Kashmir meeting in 1990, and I don't know if this gentleman or lady, whoever's mentioning it, has any proof or anything. They say we have proof, but we don't know. If there is proof, discuss it. No one is shying away. Number one. Number two, आप एक बात मैं आपको बोल दूं, you cannot question the nation building behavior and the nation building belief of the House of Tata. Whether it was in setting up a steel company when no Britishers supported. If you remember, even Pemberton, when the Tata Steel idea was mooted, they said, "Arey, tum log kya steel industry banaoge? Tum log kya hotel set up karoge?" In those days, it was said that Indians and dogs not allowed. That is what prompted Jamshedji Narsinghaji Tata to set up the Taj. Today, the Taj is a cross, whether it's pilgrim centers, whether it is this. और ये आप बात छोड़िए, मैं आपको कोविड के जमाने की बात बोलता हूं, जो 2 साल most companies, Kishwar ji, most companies sacked people, put people on furlough. The Taj was producing 50,000 meals a day. It was opening its hotels for resident doctors. It was opening its hotels for nurses free of cost. True. You tell me, why would we do it if we don't believe in India? Why would we do it if we don't believe in insaniyat? Why would we do it if we don't believe in bharatiyata? तो कहने की बातें तो बहुत हैं कि भाई उन्होंने कश्मीर में एक चीज की थी 1990 में, या उन्होंने लद्दाख में एक चीज की थी. आप एक गलती के लिए क्या पूरा जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको डाउट करोगे? And now I want to come to the moot point, given the limitations of time. When Ratan Tata took over the group, there were satraps.
people who were deeply associated with the companies. Rusi Modi with Tata Steel, Darbari Seth with Tata Tea, Mulgaonkar with Tata Motors. These were people who had built the company. Ajit Kerkar with the Taj. That was JRD style. JRD created professional priors, which is my amalgamation of professionals and entrepreneurs. It gave a kick. It allowed those industries to boom. It allowed those sectors to boom. When Mr. Tata took over, when Ratan took over, his idea was three. Number one, we need to create a unified identity. Number two, one culture, one Tata. Number three, one value system, one Tata. If you remember, in about 93, 94, even the logos began to change. Then companies were told that if you use the word Tata, there has to be a code of conduct, there has to be a code of ethics. Then Ratan started the international expansion. When we started the international expansion, we started it with basic consumer products, 8 o'clock coffee. अभी जाके recently फिर Starbucks के साथ agreement हुआ. In the process, you bought hotels, you bought Chorus, you bought Jaguar Land Rover. You turned Jaguar Land Rover into a success. Today, Tata Motors is valued at 24 billion. अब उसमें क्या भारतीय proud नहीं होंगे? जरूर होंगे. This is a company, Jaguar Land Rover, Madhuji, which Ford couldn't manage, which Ratan Tata turned around. You know why? I've been with Mr. Tata on trips to the UK. He would look at the stitching of the seats in these vehicles. One day I asked him why. He says, I want the guests, I want our customers to feel they're getting a world-class product. If you look at Tata Steel today, we have set up a plant in Kalinganagar, in Orissa. If there was politics involved, why? You would have set up. Modi ji ki aap baat karte hain. How did Sanad happen? Sanad happened because Mamata Banerjee behaved in the most abominable manner with Singur. Her fight was against the communists. She took out her anger in Nandigram and Singur on Ratan Tata. What did Ratan Tata do? He did the honorable thing. He says, I will never be in a place where I'm not welcome. What did Narendra Modi do? He says, forget them. You come to Sanad. He sent an SMS. He said, no, I met him. It's if you Google Suhel Seth Narendra Modi, I wrote that article in Financial Express. I met him the evening before. And he says, Ratan Tata को बोलिए जब पारसीज नवसारी में आए थे तो जो नवसारी का राजा था उनको एक गिलास भर के दूध भेजा. पारसीज ने उसमें चीनी मिलाई और उसको मिक्स किया और बोला कि हम घुल मिल जाएंगे भारत में. वो शुरुआत हुई पारसीज की. तो ये है हिस्ट्री. टुडे Ratan Tata has created an international Indian footprint empire of businesses which follow global standards and beat global standards of governance. That, Madhuji, would happen. Why? It is very easy for us to say, oh, they support right wing, they support left wing, they support this. When Ratan Tata was invited by Bhagwat ji to go to Nagpur and address the Karyakartas and the people in the RSS, तब लोगों ने चिल्लाहट नहीं की. And you have to understand, the man's principles are based only on one word. It's called decency. The synonym for that in his mind is dignity. That's who he is. True. When that whole thing happened with Cyrus Mistry, October 24, 2016, Ratan Tata walked up to him. 2012, Ratan Tata retired. December 28. From then till October 24, 2016, Madhuji, he did not enter Bombay House, even though he was chairman emeritus. True. When he entered Bombay House, he went to Cyrus Mistry in the chairman's office and said, the board has lost trust in you. He says, please remain on the board, but not the chairman. True. Now, no, there's no doubt. If he was manipulative, next day, October 25, 9-page letter came out of Cyrus Mistry's office, making all kinds of allegations, abuse. So, point I'm making is, suppose, Madhuji, I had some gila shikwa, or I had some anger, or I had some venomous qualities, I have attacked. What did Ratan Tata do? From 2016 till March 23 last year, जब वो Supreme Court की judgment आई, he didn't open his mouth. He did not make one comment. He says, I will not say anything. Let the Supreme Court decide.
Let the judges of this country decide. You True. think he couldn't have passed a comment? Of course he could have passed a comment. How did N. Chandrasekharan behave as Chairman Tata Sons? In the same fitrat, the same lineage, the same pedigree. It is not in there. You see, you might think, oh, I'm an avowed lover and unabashed admirer. No, I'm seeing this clinically because I advise multiple CEOs, so I can see the difference they bring, the advantages they bring, the nationalism they bring. And that's important. Fully agree. There is none to match his integrity, personal integrity, and decency. None to match. And there's no flamboyance. Like we know some of these corporates, वो कितना फ्लैम्बॉयंट स्पेंडिंग करते हैं, कितने 75 माले के घर बनाते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज दुनिया भर में बना रहे हैं अपने वेल्थ को, उसको छोड़ो. He doesn't do that. He lives as he did maybe 30-40 years ago. Madhuji, all his life he lived in an apartment in Baktawar, 1800 square feet. I know. अच्छा, you can never have dinner with him because उनके घर में आपको एक गोभी का पीस मिलेगा, एक ब्रोकली मिलेगी, एक ये. खाना भी कम खाते हैं. He doesn't drink, he doesn't smoke, he drives himself. He has never allowed anyone to carry his bag. Yes, he has never allowed anyone to carry his bag at airports. आज के ज़माने में कोई एयरपोर्ट जाए, इतना अगर कोई अमीर हो या पावरफुल हो, he will ask an old loader कि मेरा छोटा सा बैग कैरी करो शोशे के लिए. Doesn't do अच्छा, that. अब मैं कुछ और सवाल जो मेरे कंसर्न हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. जो भी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाई, the attempt was to create a certain class in them, and in TIFR or Indian Institute of Science are great examples. This, of course, is an eyesore and a heartburn for not just me, but you can see how many people are ranting against it. But forget that for the moment. अभी कैंसर पे हॉस्पिटल्स इतने बनाए, सारे जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाले. सुहेल, आप भी मानेंगे कि एलोपैथी में किसी चीज का इलाज नहीं है, ना कैंसर का, ना डायबिटीज का, ना किडनी फेलियर का. दे ओनली डू सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. इलाज है तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो फ्रेमवर्क हम बोलते हैं, योग और आयुर्वेद का जो कंबाइन है, which also means a lifestyle change. You don't just खूब खा लो, कचरा पढ़ लो, फिर इनो पी लो. ये हमारा आयुर्वेद सिस्टम वो अलाउ नहीं करता. वो आपको खाने पे पहले नियंत्रण बताएगा, और जो भी इलाज कैंसर का भी हमें आता दिखता है उधर है. I don't see any investment by this house, despite all their deep patriotism. Ratan Tata का commitment to India, I don't doubt. But कहीं भी इंडिक नॉलेज सिस्टम्स में नहीं इन्वेस्टमेंट हुआ. कहीं भी संस्कृत प्रमोशन में या हमारी भाषाओं के प्रमोशन में, he could easily have set up a world class university, and he can still do it, for study of India's own heritage and languages, जो बहुत neglected है, बहुत neglected है. और आयुर्वेद का भी अगर बाबा रामदेव और पतंजलि जो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है, कोविड के जमाने में भी, believe you me, I didn't take Covaxin. I relied only on पतंजलि का कोरोनिल, and it worked always like magic. वायरल हुआ, मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, I just took पतंजलि का कोरोनिल and और कुछ कार्य. Now the point I'm making is, we know that Ayurveda has answers. Why doesn't Mr. Ratan Tata now create a world-class institution for studying Indian knowledge traditions? ये सरकार नहीं कर पा रही, ये टाटा ही कुछ कर सकेंगे ऐसा. और संस्कृत के लिए वर्ल्ड क्लास. लोग शिकागो क्यों पढ़ने जाएं संस्कृत, हाइडेलबर्ग क्यों पढ़ने जाएं? BHU को भी इतना स्टाफ्ड रखा है, it can't anymore claim to be world class institution for Sanskrit studies. तो आयुर्वेद और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं.
Why doesn't Mr. Ratan Tata do I that? I love you for asking that question. Again, the Tatas have not been able to communicate because their ideology is to be under the radar. Have you heard of Ayurved Shala, AVS? AVS is doing remarkable work in the field of Ayurveda. They are doing three things. They are doing clinical, they are doing diagnostic, and they are doing therapy. Hmm. Chandrasekharan, who is lovingly called Chandra, who's the current chairman of Tata Sons, has ensured a tie-up between AVS and the Taj. All Jiva spas in hotels, and when I say spas, it is not luxury because a lot of people are coming. All of them have Ayurvedic stream. पर जो मैं आपको अभी कहने वाला हूं वो आप हैरान हो जाएंगे. The Tatas funded the first Ayurvedic center for healing in Kerala. आपको मालूम है? नहीं. That's my point. This is my point. नेकी कर कुएं में डाल. That center run by the Taj was the first center before Kerala became an important tourism destination. That center is only devoted to Ayurveda and Ayurvedic treatments. It is also about holistic living and wellness, as you rightly say. Coming to the point of cancer, तो इस I पे lost एक my मिनट mother. इस पे एक मिनट बात कर लेते हैं. जैसे टाटा ने वर्ल्ड क्लास होटल्स का चेन दिया हिंदुस्तान को, वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदिक सेंटर्स का चेन दें. इससे नहीं, क्योंकि हमारे देश में It's a good idea. यू नो It's a very good idea. 2% से भी कम आयुर्वेद पे खर्चा हो रहा है. नहीं 2% मधु जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. आई विल कैरी बैक दिस आइडिया. आई थिंक इट्स अ सुपर्ब आइडिया. It's a superb idea, and it is also an idea in my mind which promotes not only India, but it promotes the Indian way of living and the Indian way of lifestyle reformation. So I think it's a superb idea. I will carry that back. There's no question. आप कुछ कह रहे थे, अपनी माँ का बताने जा रहे थे. I lost my mother to cancer. So cancer has three basic streams. One is obviously preventive. A lot of us in our country do not adopt the preventive thing. हमारी आदत हो गई है कि भाई जब तक disease हमें hit नहीं करती, we don't even bother for testing. They have created three verticals: preventive, diagnostic, and treatment. In treatment, Madhuji, you'll be shocked. A lot of people from rural India, they come when they are stage 3 and stage 4. What do you offer them? You offer them sahanabhuti, you offer them empathy, but most importantly, you offer them defined palliative care. Palliative care where the families are also involved. तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. Many years ago, maybe 2011 or 2010, we set up the Tata Medical Center in Calcutta. Why? Please understand, at that time, Mamta was fighting us. We had been thrown out. Now, if he was politically inclined, he would have said, Goli maro. But Eastern India was totally neglected for cancer care. In Tata Medical Center, जब वो medical center बना, वो building बनी, उसके साथ एक और building बनी. That building is a hostel, but beautiful hostel, not luxury, but clean, spick and span. क्यों? Because attendants had to come with the patient. They needed a place to stay and not an expensive place where they spend money. That was number one. Number two, the late C.K. Prahlad, often known as the Monument Guru, inspired the Tatas to create Ginger. You know, the cheapest hotel chain in the thing. Kyun? Because we needed people to get to hotels which are cheap but which are totally functional. And it was the entire bottom of the pyramid theory. So there's a lot of work. आप और मेरे बीच में तो 2 या 2.5 घंटे की बात हो सकती है. And some of the issues you have raised, I'm grateful for. Some of the observations you have made, I'm grateful for, because these observations, until they are made, they don't fall in anyone's zehen. जहन में नहीं आती कि भाई हाँ मधु जी ने ये भी बात की थी या उसका उदाहरण दिया था, ये इस बात की चर्चा की थी. So, I mean, as we come towards the end of the program, अभी एंड नहीं आया, क्योंकि 2 सवाल मेरे पास और भी. हाँ, पूछिए. आपने ये माना कि अगर टाटास वर्ल्ड क्लास चेन ऑफ आयुर्वेदिक क्लिनिक्स और वो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होता है,
बहुत अफोर्डेबल होता है। करेक्ट। और क्योंकि डायग्नोस्टिक जो आप कह रहे हो ना, स्टेज 3-4 पे आते हैं, उसका बड़ा कारण है कि जो आम डॉक्टर है डायग्नोज भी नहीं कर पाते, और आयुर्वेद इज प्रिवेंटिव मोर देन इट इज इवन, यू नो। तो एक तो ये आप माने कि वर्ल्ड क्लास, ये आई जो एग्री, मोहल्ला आई विल क्लिनिक कैरी जो बैक होते दिस हैं, मैसेज। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक के जैसे एक मॉडल खड़ा कर दें एंड दे कैन डू इट। नंबर टू, आई विल कैरी बैक। number two, I would like you to carry this message that a world class university, that should be gift, जो नालंदा की स्पिरिट से चले, जो बनाई गई थी अमर्त्य सेन के टाइम, इट वाज अ caricature and a farce, and I don't think BJP government has put its act together, but which revives the knowledge seeking knowledge traditions of India, और उसमें खासकर भारतीय भाषाओं पे एक तो ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया एक से दूसरी भाषा में हो, और दूसरा इनके स्टडी का इंतजाम हो। आज Done. आप ये अगर करते हैं, दिस शुड बी हिज परमानेंट लेगेसी, एंड इट शुड बिकम अ रोल मॉडल ऑफ व्हाट civilizational resurgence means through I think it's a catching on great to knowledge, idea. traditional I knowledge think traditions. I think both your ideas are splendid, and I promise you I will carry them back. And you know me, Madhuji, I deliver what I promise, and I promise you these will be carried back. एक और छोटा सा कैरी बैक करो। अभी देखो आज आ रहा है, ये बहुत छोटा है और ये उनके उसमें फिट भी बैठेगा। यू नो वेरी वेल प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है। अभी तो ब्लड स्ट्रीम में भी जा रहा है। प्लास्टिक इज रूइनिंग आवर सॉइल, इट्स रूइनिंग आवर वाटर, इट्स रूइनिंग आवर फूड चेन, एवरीथिंग। अब ये बार बार कहते हैं प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता जो उतना ही या उतना ही कन्वीनियंट हो। और ये पतंजलि की, मैंने इस बात से बाबा रामदेव से भी बहुत बहस की कि आप आई ड्रॉप्स भी पहले शीशे में आती थी, अब प्लास्टिक में दे रहे हैं। इमेजिन, प्लास्टिक के कण जा रहे हैं मेरी आंखों में भी। So I तो will tell you, I will प्लास्टिक only का tell you, I will tell you what the Tatas are doing. मैं किसी और के बारे में तो जानता नहीं, इतनी जानकारी है नहीं मुझे, but Prime Minister Modi has done one remarkable thing. Single-use plastic has been banned in India. Long before Madhuji, single-use plastic was banned, all customer-facing companies within the house of Tata had already obliterated plastic. Today, अगर आप ताज में जाएं, किसी भी होटल में जाएं, आप उनके दफ्तरों में जाओ, you will not see plastic. So much so that we had launched a brand called Himalayan, which is a mineral water. Today, that is also available in glass. तो जो आपने चिंता व्यक्त की है और जो आपने सुझाव दिए हैं, those have been implemented, but yes, it is work in progress. मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि सारा कुछ सब ठीक कुशल मंगल है, but it is work in progress. I will only tell you that the house of Tatas were the early adopters, even before it became a law. ट्रू, बट आई एम सेइंग रिसर्च करके उसको अल्टरनेटिव ढूंढना। Done. खुद मेरे घर में भी मैं प्लास्टिक नहीं आने देती जहां तक मेरे लिए संभव है, बट दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। सो इफ फंडामेंटल रिसर्च इसमें हो सकती है ठीक है। टीआईएफआर के माध्यम से, इंस्टीट्यूट ऑफ I'm not साइंस के aware, माध्यम से, Madhuji, यू I'm नो, not इट विल बी aware. अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। No, I'm not aware, but knowing Chandra as I do, Chandra is an extremely sensitive person with an engineering background. I'm sure it is already uppermost as a priority in his mind, and I'm sure they're already addressing it. To be honest, as I said to you earlier, जिस पे मुझे जानकारी नहीं है उस पे मैं अपना वक्तव्य प्रकट नहीं कर जी सकता, बट आई कैन जी टेल यू कि जिस चीजों का आपने what you've said, those will be हाँ, carried back with tenacity, purposefulness, and ferocity. I'm so happy to hear that. And honestly, I'm so glad that we were able to clarify a lot of misunderstandings. एक हमारे जो वो कश्मीर पे जो सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे हैं मैंने आपको पीडीएफ भेजा, देखो भाई लाइव प्रोग्राम में अब मैं अपना ईमेल खोल के वो चिट्ठी पढूं, फिर मैं सुहेल के दूं। प्लीज डोंट मेक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, but I will certainly send forward your mail to Suhel, and if he knows anything about it, he'll get back, and I'll let you know about it.
But it's been a pleasure talking to you, Suhel. Madhuji, I And must thank you. I must thank you for, and I again don't, mean to flatter you. I must thank you for your impartiality, but equally your tenacity. I must thank you for exploring the vicissitudes, the vistas of the Tatas. मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा. There are very few things that we are proud of in India. yeah, And there are only two ways of going forward. One is we use that pride as inspiration, yeah, or we belittle that pride as cynics. My advice to the young of today is इस देश में इतनी खूबियां हैं, इस देश का संस्कार इतना बढ़िया है, इस देश की संस्कृति इतनी बढ़िया है. आप हर वक्त ये मत सोचिए कि भारत में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है. जो अच्छाइयां हैं उसका मापदंड करिए, जो अच्छाइयां हैं उनको आप एम्ब्रेस करिए. तभी भारत एक सुपर पावर बनेगा. और सुपर पावर नॉट इन मिलिट्री टर्म्स, बट एज यू सेड इवन इन योर प्रोग्राम, इन cerebral terms. The world is ruled only by people who can lead from the mind. Military तो सबके पास है, mind very few have. And Tagore said it beautifully. It is not about the mind alone, but the mind being without fear, the head being held high, and into that heaven of freedom, all of us walking together, irrespective of caste, creed, and gender. true. और एक ही लाइन ऐड करूंगी कि आज का जो जमाना है या भारत का जो पिछले 1000 साल का अनुभव है, वो बताता है कि शास्त्र, which is knowledge, के साथ शस्त्र होना भी बहुत जरूरी है. Yeah, I और agree. उसके बगैर फ्री भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमको जिस टेरर में जीना पड़ा है, we lost the entire No, I civilizational totally agree. genius and versatility. Today we are in ruins. I mean, it's civilizationally we are very badly wounded, But very badly battered. I will leave you with one last sentence. Ji, And here there is a commonality between Ratan Tata and India. And I love both. Obviously, I love my country more than anything else. India is not a nation. Like Hinduism is not a religion. Indianness is a way of life. We have to remember we are a civilizational legacy, जिसका आपने अभी उदाहरण दिया. वो civilizational legacy, we are not citizens of, we are custodians. Just like Ratan Tata was a remarkable and continues to be a remarkable custodian of the house that he built and the house that he continues to invest in with character, with certitude, and with finality. I fully agree with you, but now we want to see him invest in civilizational heritage issues and strengthening Done. our knowledge traditions, traditional Done. knowledge. Done. Tradition. Thank you, Suhel. Pleasure Thank you. talking to you. Lovely. And we'll have you more often. Every time we want some knowledge from that side of the fence, which most of us know very little about. And I would be delighted to, and it's an honor to be in conversation with you, as I've always said, and thank you for having me. Okay, viewers, I'm sure many of your misunderstandings got clarified. We'll have more sessions with Suhel if there are other issues you want to discuss with him. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, आज्ञा लेती हूँ. Please do share, subscribe and support this channel. और मुझे फीडबैक देना है तो मेरा ये ईमेल एड्रेस, मैं हर मेल को पर्सनली अटेंड करती हूँ. And I take your suggestions and your feedback very seriously. So, इन्हीं शब्दों Thank के you so साथ much. जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद And सुहेल. thank you to all your viewers. I respect every comment, contrarian, cynical, bitter, honest, because I think that is why this country is so great. We have the right to disagree without being disagreeable, and that's what we essentially should be. Dhanyavad, Jai Hind. जय हिंद, वंदे मातरम. Vande और Mataram. शुभ रात्रि. Sure.